तो एवरीवन इज रेडी, फॉर्मूला सब लोग बड़ा लर्न करके आगे सब प्रॉपर। विद रिस्पेक्ट टू बड़ा चैप्टर प्रोबेबिलिटी, मैंने बड़ा फॉर्मूला सब लर्न करने के लिए कहा था, लर्न किए सब फॉर्मूलास। So I think in last lecture what we have completed till conditional probability ना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तक मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया था। अब सब लोग बड़ा मुझे फटाफट आंसर दो। विद रिस्पेक्ट टू बड़ा इंडिपेंडेंट इवेंट्स, मैंने तुम लोग को बड़ा पढ़ाया था कि द टू इवेंट्स they have been called to be as independent. Two events they are being called to be as independent if and only if they satisfies how many conditions? Yes, if and only if they satisfies how many conditions? चलो मुझे फटाफट बड़ा आंसर दो सब लोग। What we have studied बड़ा in our last lecture? That चलो मैं बताता हूँ। The two events they are being called to be as independent events if and only if they satisfies the two conditions. They satisfies the two conditions, and that two conditions are number one is probability of A under B. Probability of A under B, which is equal to probability of A under B, which is equal to probability of A, and number two is probability of B under A. आंसर इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सब लोग बड़ा पार्टिसिपेट करो तो मजा आएगा लेक्चर में। लेक्चर विल बिकम द इंटरेक्टिव। मुझे ये बताओ कि अगर दो में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो चलेगा क्या? दो में से कोई भी एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई हुआ तो चलेगा क्या? नहीं, दोनों के दोनों यस, दोनों के दोनों कंडीशंस बड़ा अगर सेटिस्फाई हुए, है ना, तो ही द टू इवेंट्स तो ही द टू इवेंट्स they will be called to be as they will be called to be as the independent events. अब मुझे ये बताओ बड़ा फटाफट, मुझे ये बताओ, if the two events when they are the independent events, so with respect to the two events there are how many pairs of events which are also considered to be as independent? There are how many pairs of events which are also considered to be as independent? याद है तुम लोग को? Here there are
three pairs of events which are considered to be as independent, and that three pairs of events are number one is A and B dash. Number two is A dash and B, and number three is A dash and B dash. Next one. If A and B are the two independent events, if A and B are the two independent events, तो उसके लिए हम लोग ने मल्टीप्लिकेशन थियरम पढ़ा था बड़ा हम लोग ने. मल्टीप्लिकेशन थियरम पढ़ा था. चलो फटाफट बड़ा आंसर दो. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू probability of A intersection B. Answer will be equal to correct. Answer will be equal to it is probability of A into probability of B. अच्छा, on that basis चलो तुम लोग मुझे आंसर दो मैडम. If I want to find the probability of A intersection B dash, probability of A intersection B dash. चलो इसका आंसर मुझे कौन देगा फटाफट बताओ. आंसर विल बी probability of A into there is a probability of B dash. So next, probability of A dash intersection B. Answer will be equal to probability of A dash into probability of A into probability of A dash intersection B dash. Answer will be equal to probability of A dash into बड़ा probability of B dash. अच्छा, अब मुझे ये बताओ बेटा स्टूडेंट्स कि how you will find probability of A dash. How you will find probability of A dash? नहीं यार, answer is very easy. But probability of A dash is equal to 1 minus probability of A. How you will find probability of B dash? Answer will be equal to 1 minus probability of B. Okay. अच्छा, बड़ा इंडिपेंडेंट इवेंट्स जो है बड़ा इंडिपेंडेंट इवेंट्स, क्या वो थ्री इवेंट्स के बीच में करो सकता है? टाइप करो y और n. इंडिपेंडेंट इवेंट्स बड़ा थ्री इवेंट्स के बीच में करो सकते हैं बड़ा. Yes, it can occur between the three independent events. Derek, if I want to find the probability of
A intersection B intersection C. Probability of पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। A intersection B intersection C। चलो बताओ उसका आंसर बेटा क्या होगा? P of A into P of B into correct, very good, into P of C. चलो next, but the next question is, if A, B and C are the three independent events, are the three independent events, तो फिर मुझे बताओ बेटा A dash, B dash and C dash, they are also considered to be as independent. Tell me, it is a true or false बेटा? If A, B and C are the three independent events, so A dash, B dash and C dash are also considered to be as independent. Correct. The statement is a true statement. और उसके एग्जाम्पल्स बड़ा याद है ना? एग्जाम्पल्स बड़ा याद रखो, एग्जाम में यही सब बड़ा तुम लोग को काम में आने वाला है बड़ा। एग्जाम्पल्स, example is if a problem is given to a student and we want to find the probability है ना, in which the problem is solved. We want to find the probability in which the problem is solved. तो वहां पे मैंने तुम लोग को बड़ा एक्सप्लेनेशन दिया था कि the problem it can be solved either by A or the problem can be solved either by B or it can be solved either by C। कोई किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है तुम लोग को? Therefore it is an example of independent event। चलो after this person speaking truth or the person speaking false is an example of independent event। चलो apart from that उसके अलावा a family or a couple who is expecting a child, so independently that family either they can have a boy or they can have a girl। कोई किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। It is an example of independent event। अच्छा, but when a couple when they are expecting a child, तो चलो मुझे बताओ at that time what is the probability of having a boy or a girl is? What is the probability of having a boy or a girl is?
Yes, the probability is equal. The probability is the same. Acha, and what is that same probability is? That probability is 1 by 2. Very good. Acha, apart from that, two persons, the two people, if they participate in a race with the other two people, है ना? In that case, the race it can be won by any one of them, but race जो है वो कोई भी जीत सकता है, है ना? कोई किसी के ऊपर बड़ा डिपेंडेंट नहीं है, कोई किसी के ऊपर बड़ा डिपेंडेंट नहीं है ना? तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ बड़ा इंडिपेंडेंट इवेंट्स. तो मैं हमेशा बड़े याद रखना है, ऐसा कोई भी एग्जांपल जिसमें आउटकम ऑफ वन इवेंट if it does not affect the outcome of other event, then the two events they are being called to be as independent events. मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है मेरे को? चलो नेक्स्ट. नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था हाउ टू find the probability by using the odds. How to find the probability by using the odds. Odds means ratio. Odds means it is a ratio. When the odds are given in favor and odds are given in against, odds in favor and the odds in against. So with respect to favor, if the odds in the favor of the event A is x is to y, and I want to find the formula for finding probability of A. चलो भाई मुझे फटाफट मुझे बताओ फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग probability of A. It will be equal to x upon x plus y. अच्छा सब लोग को बड़ा ट्रिक याद है मैंने जो तुम लोग को एक्सप्लेन किया था बड़ा ट्रिक. क्या था बड़ा ट्रिक मुझे बताओ. इट इज न्यूमरेटर अपॉन numerator plus denominator, numerator upon numerator plus denominator. Very good. And suppose if the odds in against of event B, they are m is to n. They are m is to n. So what a probability of B, it will be equal to probability of B, it will be equal to n upon m plus n upon m plus n. और उसके लिए मैंने जो तुम लोग को बड़ा ट्रिक बताया था वो याद है सब लोग को. अच्छा क्या था वो ट्रिक मुझे बताओ.
is the denominator अपॉन न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर। चलो रिकॉल हो रहा है ना, बड़ा सब रिवाइज हो रहा है ना तुम लोग का सब। चलो नेक्स्ट। अच्छा, अगर तुम लोग को बड़ा सम में प्रोबेबिलिटी दिया हो, बड़ा फ्रॉम दैट प्रोबेबिलिटी बोल, क्या तुम लोग बड़ा उसमें से ऑड्स मुझे फाइंड करके बता सकते हो? ये हो, ये इफ द odds, sorry, probability but in the favor of the event A, probability of A, the answer is बड़ा 3/7। तो चलो बताओ odds in favor of the event A क्या होगा मैडम? मेरा टेक्निक क्या था? न्यूमरेटर अपॉन न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, बट बड़ा न्यूमरेटर तो अपने को पहले से पता है 3, तो 7 में से 3 चला गया है। करेक्ट, तो odds बड़ा विल बी 3:4। चल नेक्स्ट, probability of A, it is given to be as what, 8/13। चल भाई 8/13 बड़ा, तो चल फटाफट मुझे बता द odds बड़ा इन favor of the event बड़ा, it will be 8:5। वेरी गुड। सब लोग को बड़ा आंसर नहीं आ रहा है, बहुत कम स्टूडेंट्स बड़ा आंसर दे रहे हैं। चल नाउ विद रिस्पेक्ट टू बड़ा अगेंस्ट, probability is given as बड़ा 9/14 बड़ा, तो चलो with respect to बड़ा 9/14 what will be the odds? It is denominator upon बड़ा न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर पता है, तो न्यूमरेटर मुझे बताओ सिर्फ क्या होगा? 14 - 9 5। वेरी गुड, करेक्ट, परफेक्ट। चलो नेक्स्ट,